Before moving, can you guys make the resonating structure of this compound? Okay, so I am making the initial arrows. As you can see, we have the case in which we have A double bond B, single bond C, and a single bond C, and C has a lone pair, right? So the most electron rich part here, it is the lone pair. So lone pair will move like this, and this pi bond is going to move like this. Okay. So can you guys make the rest of the resonating structure and send me on my WhatsApp? I feel like Okay, sir. 5 minutes, 5 minutes will be enough.
Arpit, I got your answer. या दैट्स फाइन. लास्ट वाला थोड़ा ठीक नहीं है, ओ और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आके. Okay, sir, understood. Okay, Amna has sent. Yeah, very good, guys, very good. What about you, Rishita and Pudeja? Just waiting for you guys. Sir, I'll send it in 2 minutes. Okay. Yeah, sure, Amna, fine.
Important question to me, but I will tell important question. It will be better that you ask your teacher, but I will tell you what are the important topics basically, है ना? कहाँ सवाल Okay, आ sir. सकते हैं? ओके चलिए। ऋषिता, काफी टाइम लग रहा है आपको, so I'm making the structures here, okay? So here we'll have double bond OCH3, and there will be a positive charge here and delta negative, right? My bad. हम ही भूल गए, बताओ भाई। Complete negative charge. Just give me a second. Just give me a second. Okay, हाँ ठीक है। Now we have again A double bond B, single bond C, and C has a negative charge. So this negative charge will move down. This pi bond will move further down. The negative charge will make a double bond. This double bond is as it is. This double bond will be as it is, OCH3, and there will be a positive charge, and there will be a negative charge here. Now again, this negative charge will move here. This pi bond will move here, and then we are going to have something like this. We'll have negative charge here. The double bond will be here and here. Double bond OCH3 and positive. Now this negative charge will move here. The double bond will move here and it will neutralize the O positive. And we will get the benzene back with double bond here, here, and here. OCH3. And the lone pair will be back. Okay. So, Akib, you understood what was wrong in your last structure? The Yes, last sir. structure that you made? है ना? Yes, sir. And if I make the resonance hybrid structure for this, it will look something like this. OCH3, delta negative, and delta negative at the ortho and para positions. Okay. Now, as you can see, for sure, we are having how many structures we are having? We are having 1, 2, 3, 4, and 5 structures, right? Not all these structures are same. This is neutral. This is also neutral. This is having positive and negative charge. All these are having different charges. So that is why obviously we can say that some of the resonating structure are more stable than the other. है ना? जो न्यूट्रल होगा that will be more stable, है ना? If you're having charges, then उसके हिसाब से भी stability कुछ ना कुछ differ करेगी. That is why the more stable ones, they contribute more. And that is why we need to learn about the thing that is known as, at the topic, like what is the contribution of each resonating structure? Please write contribution of different resonating structures. Write the first point here. All resonating structure contribute to. Also, guys, can you please turn your cameras on? All the resonating structure contribute to the resonance hybrid structure, But the contribution, of each resonating structure is not same. Right, next point. More stable resonating structure contributes more and is more dominant. That means we basically need to learn the rules for stability of resonating structure. है ना? जो ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, तो हमको पता रहना चाहिए which is more stable and which is more dominant resonating structure, so that we can get an idea about the resonance hybrid also. Please write rules for stability of resonating structures.
ठीक है. I hope you have written the first 2 points. Now write the rules for stability of resonating structures. देखिए बहुत ही सिंपल है. More bonds means more stable. ठीक है. Now this is the first rule. Please see here, guys. Now this is a point where you have to focus and not write. See here, guys. See here. देखिए ध्यान से. More bonds means more stable. Now this is the first rule for stability. And while you are comparing the resonating structure, let us suppose, please don't write this, okay? Please don't write this. RS1, RS2 and RS3. ठीक है. RS1 में 5 बॉन्ड, इसमें 4 बॉन्ड, इसमें 3 बॉन्ड. So which will be more stable? You don't have to Five. look anything else. RS1. 5, 4, and then 3, right? You don't have to look anything. There are further more rules. But if you are getting your answer, if you can rank the resonating structures, you can arrange the resonating structures only with the bonds. If you count the bonds and you get different number of bonds, then वहीं पे खत्म है बात, and you will give the rank, है ना, कि सबसे ज्यादा ये stable, उसके बाद ये, उसके बाद ये. Make sense? Yes or no? What you have to do? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. Now, Yes. let us suppose if the bonds are same, then what we need to look whether something is charged or neutral. So obviously neutral is more stable than charged. We are going to look at the second rule only and only if the first rule is a tie. If we are having a tie on the first rule, then only we are going to look at the second rule. The third rule, let us suppose that both of them are charged, or maybe both of them are neutral. Both of them will be charged basically, more or less. So if we are having charges, then like charges should be far apart and unlike charges should be near for stability. है ना. कब होगा stability? We will gain stability. More stable structure will be if you are having like charges, then they should be far apart. If you are having unlike charges, then they should be as near as possible. ठीक है. तो इन दोनों कंडीशन में will have. हाँ हाँ, बोलिए रशिता. So, sir, cation and anion should be together, and like if both नहीं cation नहीं and double cation. नहीं 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 नहीं, एक सेकंड. ठीक है ना. देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं है ना. थोड़ा सा मतलब आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट लेकिन अगर हम लोग सही वर्ड यूज करें तो क्या ही मुश्किल है ना. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देखिए नजदीक है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हियर दे आर फार अपार्ट. मेक सेंस? है ना. Yes, sir. तो हम ये कह सकते हैं First, बाकी सारी चीज ना. तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, मतलब सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन थर्ड स्ट्रक्चर. मेक सेंस? ठीक है. नॉट yes. आयंस, बट यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है. Now, the fourth thing is, if we are having negative charge, then the negative charge, if it is an electronegative element on electronegative atom, then that will be more stable. Okay, so negative charge is more stable on electronegative atom. On या तो हम लिख सकते हैं more electronegative atom, and positive charge is more stable on less electronegative atom. ठीक है. तो अगर हम देखिए हम एक बात बताते हैं. फॉर एग्जांपल एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वी आर हैविंग आरएस. ठीक है ना. आरएस लिखते हैं हम. RS1 है आपके पास. इन दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के पास है पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के पास है नेगेटिव चार्ज. RS2 है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 इन विच ऑक्सीजन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज. विच विल बी मोर स्टेबल? बाकी सब कुछ Second सेम one. है. मेक सेंस ना. Yes, sir. मेक सेंस. सेकंड वन विल बी मोर स्टेबल. ठीक है. चलिए राइट द रूल्स. रेज योर हैंड वंस यू आर डन, and then you can write the question. Arrange the following according to their
stability. Please raise your hand once you're done writing, then I will write the question. Sir, बताइए. can you explain the third one? Third one. Yes. ये देखिए. We are going to compare the second and third structure. Okay. Amna. Okay, sir. So can you see the positive and negative? If you see the number of bonds ना, तो देखिए number of bonds के लिए हम आपको बता देते हैं, अपना pi bond count कर लिया कीजिएगा. ठीक है. If there are Okay. same number of pi bonds, this is for everyone guys. ठीक है ना. As you all know that sigma bond does not break, है ना. In resonating structure we don't break the sigma bond. So obviously that whatever difference will be present due to the pi bond. You count the number of pi Yes. bonds if they are same. यहाँ पे देखिए एक दो तीन pi bond, यहाँ पे भी तीन pi bond. That means what we are having, the number of bonds are same. Next Yes. we look that both of these are charged, तो neutral भी नहीं है कोई. Then we have to look on the separation of charges. So when we are having unlike charge, that means देखिए positive भी है और negative भी है. So unlike charges Yes. should be nearby or far apart. आमना, unlike को कैसा रहना चाहिए, नजदीक नजदीक या दूर दूर? Have you written, did you write the rule? Yes. हाँ पढ़ के बताइए. Like charges should be far apart and unlike charges should be near. नहीं, फिर से पढ़िए. फिर से पढ़िए क्या Like लिखा आपने. charges, हाँ, like like charge charges should be far far apart apart and and unlike charges should be near. so we have unlike charges ना, positive and negative, these are unlike, correct? Yes. अब बताइए which will be more stable, 2 or 3? Unlike charges को कहाँ रहना चाहिए, नजदीक या दूर? There should be near or there should be far? Unlike should be near. हाँ, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड या थर्ड? Second one. गॉट इट. Yes. राइट द क्वेश्चंस. ठीक है. देखिए प्लीज लीव सम स्पेसेस बिकॉज हम लोग यहाँ पे ना ये भी काउंट करेंगे कि इसके पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, वेदर इट इज न्यूट्रल और चार्ज. ठीक है. एंड चार्ज ऑन, चार्ज कौन से कौन एट, चार्ज ऑन एटम, किस एटम पे क्या चार्ज है वो भी हम लोग लिखेंगे. ठीक है ना. सो यू हैव दीज थिंग्स अवेलेबल ऑल्सो, सो यू हैव स्पेस. नाउ राइट द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन बी दिस पाई बॉन्ड कैन मूव. तो आपके पास एच सी, मेरा कॉपी कर लेते हैं, है ना. हियर यू आर हैविंग ओ पे नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. देन वी राइट द नेक्स्ट स्ट्रक्चर सी. लेट्स सपोज यहाँ पे ओ पे नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग दैट दिस लोन पेयर इट इज कमिंग लाइक दिस. ठीक है. ओ पे नेगेटिव और ओ पे ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा. यू विल फिल इन द ब्लैंक्स, है ना. ये बताइए बॉन्ड्स कितने हैं, न्यूट्रल है, चार्ज है ना. हम बस ना आपके लिए ये बी वाला करके बता दे रहे हैं बिकॉज इन दिस वी आर हैविंग चार्ज. देखिए कैसे करना है आपको. टू काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 1 2 3 4 बॉन्ड्स. न्यूट्रल और चार्ज, इट इज ऑब्वियसली चार्ज एंड चार्ज इज ऑन व्हाट एटम. सो ऑक्सीजन पे है नेगेटिव एंड कार्बन पे है पॉजिटिव. ठीक है. इस तरह से आप लोग को लिखना है. ठीक है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स एंड देन सेंड इट ऑन माय व्हाट्सएप.
Okay, Parashita, just looking at your answers. Very good. Fine. Rishita, I think whatever you have written, that is correct. I'll keep looking at yours. Okay. Oh, B में you have not made the correct structure. C आके Okay, sir. एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड डाल दिया आपने. ठीक है. Okay, fine. I'm now waiting for your answer. अब आप लोग कर सकते हैं ना. Tell me, guys. Rishita and Akib. See, as you have written, this is Yes. having 5, this is what Yes, sir. neutral, this is having 5, this is charge, and oxygen is having negative, and oxygen is having positive. This is 4, this is charge, and here oxygen is having positive, and carbon is having negative. Tell me, according to these, first of all, we have to compare only and only. You have to look at the bonds. You have to compare the A structure and the C structure. So between A and C, which is more stable, guys? Between A and C, which is more stable? बोलो भाई. A is most stable. A is more stable. Very good. Because it is neutral, है ना. कैसे मतलब bonds पे तो टाई हो गया, तो neutral और charge देख लेंगे हम लोग. So obviously A is more stable, and then we are having C because according to the bonds A and C में ही हमारे पास क्या था? There was struggle between A and C only. What about B and D? The bonds are same. Both of them are charged. Now what we are going to look? B is more stable because it's on the electronegative element. हाँ. The Also negative before electron- that, हाँ. Also before that, लेकिन एक चीज देख लीजिए. Both are having same charge separation. है ना. Charge separation Yes. is same. Then only we are going to look at the electronegative element. So here oxygen is electronegative, तो उसपे negative है, और यहाँ पे oxygen पे positive charge है. That is why this will not be stable. So the next stable structure is going to be B, and then the last one is D. So we can say that the D is having negligible effect, है ना, on the resonance hybrid structure. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. अरे Yes, बोलो sir. भाई. हाँ ठीक है. चलिए. Now let us see. There is a question in your NCERT. So थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, then we will move on. आई होप अभी तक आप लोगों ने सवाल लिख लिया होगा. पहले सबसे पहले बताइए, इज देयर एनी केस ऑफ रेजोनेंस पॉसिबल हियर? टेल मी गाइस, इज देयर एनी केस ऑफ रेजोनेंस पॉसिबल हियर? यू हैव सीन ना डिफरेंट केस. नो. देखने में तो ऐसे ही लग रहा है. नो. CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड कार्बन. व्हाट इज CHO?
कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सी एच ओ कैसा होता है? सी पे डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड एच। अब देखो रे भाई, पाई सिग्मा पाई दिखा, है ना? एंड इफ यू विल लुक एट द नोट्स, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम ना चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन को हमने ऐसे कर लिया और डबल बॉन्ड ओ लिख देते हैं, ठीक है ना? इफ यू सी वी हैव डन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इटसेल्फ, आपकी नोटबुक में है, और देखिए कैसे होगा। लुक एट योर नोट्स, दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाई सिग्मा पाई वाले में हमने कराया था। बन रहा है। अरे मिला या नहीं मिला, बन रहा है कि नहीं रिश्ता है नाकिब? Done, sir. अरे तो भेजोगे नहीं? Sorry, sir. I'll send. हाँ, अरे हो जाए तो भेजा कीजिए। ऑल्सो यू हैव शोन द रिलेटिव स्टेबिलिटी, राइट आकिब? Sorry, sir. यू हैव शोन द रिलेटिव स्टेबिलिटी। No. हमें तो रिलेटिव स्टेबिलिटी भी देखना है ना? वन टू Yes. तीन मिले होंगे आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट? थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हम्म। Yes, sir. तीनों में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद उसके पास उसको भी देख लीजिए। भाई सेम रूल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, न्यूट्रल चार्ज।
क्या हुआ आपके बार रिश्ता सेंडिंग द आंसर? जल्दी भेजिए सर, जरा। got confused, sir. जैसे जो बनाया वो भेज दीजिए। रिश्ता ऑल्सो वट एवर यू हैव डन प्लीज सेंड। रिश्ता, यू डन राइट? Not yet, sir. रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी नहीं बना? अरे यार देख के बना लो भाई कम से कम। यू गाइस हैव टू रिवाइज ना, बिना रिवाइज करे आए हैं क्या? सी, first resonating structure will be like this: CH2 double bond CH, single bond CH, single bond O पे negative and carbon पे positive. A double bond B, single bond C, C पे positive. So there will be a bond shifting like this, and you will have CH2, single bond CH, double bond CH, single bond O, and O is having negative. This carbon atom will have positive. You have this is A, B, and C. Now let us look at the bonds first of all. If I look at the bonds only, I'm just looking at the pi bonds, okay? Because only pi bond moves and pi bond breaks. So here we are having two pi bonds, here we are having one pi bond, here we are having one pi bond. So obviously A is the winner after all. A is the winner. Now let's look at B and C. So whether it is neutral or charged, so both of them are charged. After neutral and charge, we are going to look at the charge separation. What we are going to look at? Charge separation. So if we are having opposite charges, so opposite charges should be near. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सो हियर वी आर हैविंग नियर चार्जेस, है ना? जो यहाँ पे चार्ज है दीज आर नियर एंड हियर इट इज फार. सो ए के बाद कौन हो जाएगा? बी एंड देन सी. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. Yes. क्या कंफ्यूज हो गए थे आखिर? सर मैं जो पहला वाला ना CH2 डबल बॉन्ड ओ, CH सिंगल तो मैं उसी को कर रहा था। स्ट्रक्चर ही गलत कर बनाया आपने तो, देखिए जरा भाई, रिवाइज करो भाई. एंड व्हेन यू आर रिवाइज, हाँ गलत है ओके. स्ट्रक्चर देखो, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में तुम्हारे सेम पास दो नहीं, सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखो तुम्हारा गलत नहीं है. नहीं सर, सेम है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तुम्हारा, ये दिस इज नॉट डबल बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड बनाया ना हाँ, तुमने? यस सर। गलत है ना? ठीक है गाइस, वेन एवर यू आर रिवाइजिंग, प्लीज इस बात को ध्यान से समझ लीजिए. वेन एवर यू आर सर रिवाइजिंग, रिवाइज विथ योर पेन एंड पेपर. ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ सर द स्ट्रक्चर्स व्हाइल यू आर रिवाइजिंग. हाँ जी बताएं. वो एरो था, डबल बॉन्ड नहीं, वो सिंगल बॉन्ड ही है। तो ठीक से बनाओ फिर तो हम बोलेंगे. कैसा आ रहा है सर तुम्हारा? ठीक है, इट्स सॉरी फाइन सर। देन इफ इट इज सिंगल बॉन्ड. ये तो लेकिन तुमको भी डबल बॉन्ड लगा एक बार के लिए, है ना आकिब? यस सर। हाँ तो फिर हमको तो लगेगा ही, है ना? ठीक है, इट्स नॉट एन इशू. ठीक कर लीजिए उसको. फिर गाइस, देखिए नेक्स्ट आप लोग लिखिएगा मेसोमेरिक इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट देख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा ना मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है, सी हियर गाइस, डोंट राइट एनीथिंग. Now, obviously, mesomeric effect and resonance effect, it is of two different types. ठीक है, प्लस एम एंड माइनस एम, या फिर प्लस आर एंड माइनस आर. So we are having प्लस एम इफेक्ट. ठीक है, प्लस एम को प्लस आर भी बोल सकते हैं ना, और प्लस आर. माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट. माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट. नाउ व्हाट हैपेंस इन प्लस एम इफेक्ट? In plus m effect, or rather in when we are having plus m group, then what we can say plus m effect में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, that will be shifted towards the electron density is shifted towards the main chain.
electron density is rather I should say like this, na? Electron donation towards carbon chain via resonance. ठीक है, एग्जांपल से हम आपको बताते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव CH2 double bond CH and OH. So oxygen is having lone pair electron. Please don't write now, है ना? So you have A double bond B single bond C C pair lone pair, right? So we have this case of resonance, and what is happening? This OH atom, it is going to put the electrons here, and this pi bond will move here. So as you can see, this carbon chain, it is getting some electrons, right? It is getting some electrons. Now, in this case, what I can say that OH group is donating electron via resonance. Therefore, हम एक और चीज कह सकते हैं that OH is a plus M group. OH is plus M group or electron donating group. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है. Yes. Now in minus M or minus R, what will happen? इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल from the carbon chain via resonance. Via resonance. For example, I can have the same thing that we did just right now, CH2, double bond CH, single bond, single bond CH, double bond O, right? So in this, basically what is happening, the electron density is going from like this, right? ऐसे ही तो हो रहा है ना? You can see all the arrows. They are going towards the CHO group, Yes. and they are going away, है ना? They are going away from the main chain, main carbon chain. So here we can write the group that we are having, that is CHO, is withdrawing electron via resonance. Therefore, CHO is minus M group or electron withdrawing group. What did I see? So, please tell me. Sorry, sir. Yes, sir. All of you got this, ना? बात Yes, समझ में sir. आएंगी नहीं, है ना? ठीक है, चलो छापिए. Raise your hand once you're done. Please raise your hand once you're done writing.
Waiting for Amna, Aqib, and Khudeja. Okay. Now the important part to understand here is how to identify whether a certain group, a certain functional group, whether it is a plus M group or a minus M group. Okay, so please write the topic: determination of plus M or minus M group. And कर लीजिए and minus M group. Now, before going towards the plus M and minus M group, there is a term that you have to understand: the key atom. Now, key atom is not a word from organic chemistry. It is just a made-up word from my side. ठीक है? तो की एटम कैसे ऐसे आपको सवाल नहीं, व्हाट इज की एटम, कुछ सवाल नहीं आने वाला, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ओके. Also, determination of plus M or minus M group, no one is going to ask, but this is a skill that you need to have. Got it, guys? तो ये आपसे कोई पूछेगा नहीं कि how to determine plus M and minus M. They will directly ask you application questions. Okay. So please see what is key atom and write this with me: the atom of functional group. That means we need to identify what is the functional group that is directly attached to the carbon chain, to the carbon chain. और बहुत सारे टाइम ये बेंजीन रिंग रहेगा, और बेंजीन रिंग, और इट इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग. ठीक है, सवाल देते हैं आपको. आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप एंड देन द की एटम, एंड देन की एटम. ठीक है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप एंड देन ओनली यू विल आइडेंटिफाई द की एटम. सी, बेसिकली हम बहुत एग्जांपल दे रहे हैं, आसान वाला पहले. चलिए यहां पे बताइए, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? OL. OL नहीं लिखे, OH बोलिए, OH बोलिए, OH बोलिए अब, है ना? ठीक है, दिस इज OH. व्हाट इज द की एटम? Um, व्हाट इज द की the एटम? first one. अरे ऑक्सीजन, That's है ना? द एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप किसका होगा? द एटम विल बी ऑन द फंक्शनल ग्रुप विच इज अटैच्ड डायरेक्टली टू द कार्बन चेन. ये कार्बन चेन है. अरे ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो भाई. ओके. नाउ नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड O and OH. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? OH again. नहीं, ओइक एसिड वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, C डबल बॉन्ड O A OH. double bond. हाँ, COOH. ठीक है. नाउ कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द कार्बन चेन. Oxygen, hydrogen. नहीं, कार्बन, कार्बन है ना, ये चेन हो गया ना फिर तो. हाँ रिश्ता, Yes. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है रिश्ता? पता नहीं सर. पता नहीं क्या हो रहा है. ध्यान दीजिए, ध्यान, है ना? ध्यान से आंसर दीजिए, तभी आएगा. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? OH. OH तो है ही नहीं. अब भूल गए आप लोग. CHO. नहीं, आप लोग यानी COH. COH नहीं, CHO बोलते हैं इसको. नाउ दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? कार्बन चेन या फिर कार्बन चेन बोलो. मीन चेन तो नहीं, कार्बन चेन. नाउ टेल मी विच इज द की एटम? Oxygen. अरे यार, ये तुम लोग भाई, तो बहुत ही मुश्किल है यार.
ये है ना भाई, दिस इज अटैच टू द मेन चेन ना। अरे यार ये Yes, आप sir. लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? यस सर, तो तीसरा सवाल में इस समय आंसर आना चाहिए था ना। दिस इज द बॉन्ड विच इज कनेक्टिंग द फंक्शनल ग्रुप एंड कार्बन चेन, यस और नो? Yes, sir. I said oxygen. Uh, थॉट की बात ही नहीं है, थॉट से पहले थॉट कर लीजिए ना जरा, है ना, no, पहले I सोच। said. यू सेड व्हाट? कार्बन? No, I said oxygen and then carbon. अच्छा, नहीं तो ऑक्सीजन ही तक आया, फिर तो नहीं आया कार्बन, ठीक है, सॉरी। फंक्शनल ग्रुप NH2. NH2 NH2 एंड की एटम and nitrogen. नाइट्रोजन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए पहले, इससे आंसर कर लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। फंक्शनल ग्रुप CH3O. है ना, OCH3। This is functional group and this is the carbon chain. Tell me, what is the key atom now? Carbon. Oxygen again. ऑक्सीजन ना भाई। यार हमको समझ ही नहीं आ रहा भाई, दिस इज द बॉन्ड विच इज कनेक्टिंग द मेन चेन एंड फंक्शनल ग्रुप, यस और नो? कि भाई Yes, sir. ये वाला बॉन्ड किसके साथ है, फंक्शनल ग्रुप कौन से एटम के साथ है? Oxygen, sir. फिर व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? OCH3. नो, OCH3 तो कहीं है भी नहीं भाई। यार तुम लोग ना पढ़ना छोड़ दियो, मतलब ये कार्बन एटम है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O। यार दिस रियली सैड। CO इज द फंक्शनल ग्रुप। अब बताइए, देखिए ये बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है, फंक्शनल ग्रुप के कौन से एटम के साथ बना हुआ है, रेड वाला? Oxygen. ये क्या ही चल रहा है पता नहीं। ये देख मतलब, यार देख तो लो भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कैसे, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, वो भी आप लोग नहीं बोल रहे सही से, पता नहीं वाई यू आर हैविंग की कार्बन नहीं होगा, या फिर पता नहीं कैसे आप लोग कर रहे हैं। ये तो आई मीन आई कैन नॉट सी फॉर यू गाइज ना। निश्चिता, आपको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस शुड नॉट बी, इतना गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना। आपको समझ, देखिए आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है क्या, ऋषिता टेल मी गई, बताइए। Sir, key atom is oxygen, right? नो, व्हाट इज द की एटम, टेल मी। डिफाइन, डेफिनेशन लिखा है आपने? हाँ, हाँ बताइए, क्या की एटम? the atom of a functional group that is attached to the carbon chain or the benzene ring. Attached directly. हाँ कौन सा है फिर बताइए, कार्बन या ऑक्सीजन? फंक्शनल ग्रुप का कोई एटम होगा ना। Carbon. Sorry. ठीक है, बेसिकली आपको आना चाहिए, मतलब ये आएगा काम आपको जब आप लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट होगा, दैट विल बी द की एटम। लेकिन फिर भी यार इतना मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे, छोटी सी चीज में थोड़ा ध्यान देके कीजिए। रेज योर हैंड वंस यू डन राइटिंग। आई एम वेटिंग फॉर आमना, खुदेशा एंड ऋषिता।
Now, see, once you are done, now, you are going to follow this particular flow chart. Functional group identify कीजिए. Then look at the key atom. ठीक है? Now, then ask, is it connected to more electronegative atom via multiple bond? ठीक है? इसमें आपके पास दो आंसर निकलेंगे. If it is a yes, then it is a minus M group. Now, if it is a no, then ask, is there, अगर if it is a no ना, then यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए plus M group if key atom has lone pair. Make this flowchart. सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, then you will identify the key atom and then you will ask whether the key atom is connected to more electronegative atom via multiple bond. If yes, then it is a minus M group. If no, then it is a, then you will have to see whether it is having a lone pair or not, है ना? अगर lone pair हुआ तो plus M, otherwise it will be nothing. But in most of the cases you will be seeing that it is having a lone pair electron. ठीक है? अगर no answer आ रहा है, then it is most of the time is going to have a lone pair electron. Raise your hand once you're done writing. Done? See. Got a question? Identify the plus M and minus M group. See, guys. देखिए आप डायरेक्टली नहीं बताएंगे प्लस एम एंड माइनस एम. यू विल गो स्टेप बाय स्टेप. यू विल आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, then you will identify the key atom, then you will identify the whether it is connected to En with a double bond, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड से है कनेक्टेड नहीं. ठीक है, En MP. ठीक है, En MP connected to more electronegative element via multiple bond. ठीक है, इफ इट इज अ यस और नो देन यू कैन डिसाइड, एंड अगर नो आ रहा है तो फिर आप देख लीजिएगा लोन पेयर है या नहीं. टेल मी अबाउट द फर्स्ट वन. व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप गाइस? OH. What is the functional group? OH. What is the key atom? Oxygen. Oxygen. ऑक्सीजन किससे कनेक्टेड है फर्दर? Carbon. नहीं, कार्बन छोड़ देना, इधर नहीं, ग्रुप में बताओ, ग्रुप में किससे कनेक्टेड है? हाइड्रोजन. अरे OH में है ना, हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, राइट? सो इट इज नॉट कनेक्ट, गॉट इट ना? सो इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. उस ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है, हाइड्रोजन कम ही है. सो नो. नाउ इज ऑक्सीजन हैविंग एनी लोन पेयर? No. इट इज हैविंग Yes. लोन पेयर ना भाई. जब दो बॉन्ड होगा तो एक लोन पेयर होगा ना. ये नो रिश्ता. ठीक है, देखिए बहुत छोटी छोटी चीज ना याद करनी पड़ेगी यहाँ पे. इट इज हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इट इज गोइंग टू बी अ प्लस एम ग्रुप. मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस. Yes. So if it Yes, doesn't sir. have lone pair electron, sir.
वो नहीं आएगा, वो केस ही नहीं आएगा, वो एक केस आएगा, लेकिन उसमें भी वो आप जनरली ना वो प्लस एम ही रहेगा, ठीक है ना, यू विल सी दैट इट इज हैविंग ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए। Yes. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, टेल मी। फंक्शनल ग्रुप, CHO. CHO. CHO, की एटम, C. वेरी गुड। Carbon. हाँ, कार्बन किस किस से कनेक्टेड है Hydrogen इन and द ग्रुप? oxygen. Hydrogen, oxygen. एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से तो कनेक्टेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव Uh, एलिमेंट, बट वाया डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड? Single Double. bond. डबल। CHO का स्ट्रक्चर ऋषिता, Okay. So over here, oxygen doesn't have lone pair. इट हैज लोन पेयर, Okay. बट यू नो So बट इट इज नॉट अ की एटम, सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट, मतलब हर किसी भी एटम में नहीं हम पूछ रहे ना, की एटम पे लोन पेयर होना चाहिए, मेक सेंस ऋषिता? yes. थोड़ा देखिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए प्लीज, गलत गलत ऐसे मिक्स मत कीजिए ऋषिता, ओके? We are Yes. focusing on the key atom. Is the key atom having double bond, multiple bond via is it having a multiple bond with a electronegative element? Yes. तो बताइए, प्लस एम Yes. या माइनस एम? Minus ओके, नेक्स्ट वन, टेल मी। NH2. देन, Nitrogen. देन It has single bond and with, so it'll पहले be बताइए। plus M. हाँ, हाँ, वेरी गुड, इट इज नॉट अटैच ना, Third. तो क्या हो जाएगा, प्लस एम। इट विल बी हैविंग लोन पेयर, वन लोन पेयर, राइट? Yes. 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड में हैं, 2 बच गए, 2 लोन पेयर, Yes, sir. है ना? ओके, ये यार डरो मत पहले तो ऋषिता, ठीक है ना, आराम से चिल करो। हम डांट रहे हैं लेकिन डांट सुनने के लिए वो रेडी रहो आप, लेकिन आराम से, ठीक है? मेक सेंस? Yes, sir. आप डरिए उन लोगों से, दोज हु हेट यू। आई डोंट हेट यू, आई एम जस्ट स्कोल्डिंग यू। ओके रशिता? Yes, sir. ठीक है, डोंट वरी, यहाँ पे बताइए, ठीक कर रहे हैं आप। COH. COH, एंड देन Uh, C is the key atom. की एटम, It does. इज इट It कनेक्टेड? has. It has double bond with oxygen. हाँ, तो इट विल बी यस, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल Yeah. बॉन्ड। So yes, sir. So minus M. Sir, how can it be double bond with car oxygen? Okay. ग्रुप याद रखो भाई, ये तो बहुत पुराने ग्रुप्स हैं तुम्हारे, कोई नया चीज आप लोगों को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखिए, माइनस है ना, वही एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट अबाउट दिस वन? Same thing, sir. सेम थिंग, ओके, बट यहाँ पे COR हो जाएगा, C हो जाएगा, यस हो जाएगा, एंड दिस विल बी माइनस एम। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? COCl. Uh, हम्म, it has double है ना, bond with oxygen. Yeah. ऑक्सीजन, या करेक्ट, सो कार्बन, So एंड देन यस, एंड देन माइनस minus. एम। ठीक है, आ गया ना ऋषिता? वो आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, बट इट इज नॉट वेरी टफ। Just now give me a second. There are a few more groups that we have to look at, okay? You have to do the same thing, है ना, almost same thing for these structures also. इसमें थोड़ा सा उसमें
So we have to do this? ऑब्वियसली, और किसके हैं? देखिए, whenever you are confused about a functional group, please go back to the first class जहां से हम लोगों ने functional group start किया था, है ना? अच्छा, एक और चीज ना बस हम आप लोगों को बता देते हैं कि in this context functional group is anything which is not carbon and hydrogen, है ना? कार्बन हाइड्रोकार्बन अगर नहीं है, alkane alkene and alkyne नहीं है अगर, then it is a function. For example, Br, if you guys remember, then it is not a part of the 10 functional group that we have written. It is a part of a substituent. ठीक है, but that thing is only restricted to the nomenclature. अरे भाई, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है ना? वो जो 10 फंक्शन को बताया हमने, दैट इज ओनली फॉर दी नेमिंग। ठीक है, इन जनरल अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, देन फंक्शनल ग्रुप इज एनीथिंग विच इज नॉट एल्कीन एल्कीन और एल्काइन। So the second structure, is that H or HN? Nitrogen, then hydrogen. Nitrogen is bonded to one hydrogen.
Guys, one more minute and then you will send me whatever you have done. Okay. So, Amna, are you there in the class? Yes, Amna. Yes, sir. So you are not answering anything, Amna. Hmm. देखिए again you are not answering. आपको समझ में आ रहा है आमना? Yes, sir. Actually, I'm so tired today. You are very tired. अच्छा, ठीक है. See, it's fine, but please rewatch this lecture, है ना? Yes, sir. Okay. Thanks. Please send me whatever you have done. I keep waiting for you. See here, guys. Can you please stop writing and see here? Okay. For the first one, it's fine. CONH2, that is a group. And in this case, the benzene ring is connected with carbon. And carbon is connected with electronegative element oxygen. And that's why it is going to be -M. If I look at the structure, तो ध्यान से देखिए. It is again CONH, right? CONH. But here, nitrogen is connected to the benzene ring. है ना? Yes or no? And if you're saying that Yes, CO sir. is the, ठीक है, अगर आप ये कहेंगे that CO, this is the functional group, then please remember कि CO नहीं, CONH है. The complete thing is a functional group. Okay. Also, if CO is the functional group, then if carbon तो ये nitrogen के साथ जुड़ा हुआ है, mean carbon chain तो है नहीं. Okay, both of these are same thing, but the point of attachment is carbon in the first case and nitrogen in the other case. Even though both of them are same group, but यहाँ पे nitrogen is not connected to any electronegative element. ध्यान से देखिएगा अगर, तो nitrogen is connected to hydrogen and nitrogen is connected to carbon. तो ना ही carbon more electronegative है, ना ही hydrogen. That is why it is not connected to any more electronegative group. And nitrogen having 3 bonds, so there will be one lone pair, and that's why it is going to be plus L. Here also, if you see, the functional group is C double bond O, and here we are having one more oxygen. C double bond O and then one more oxygen. But the difficulty is that the oxygen atom, it is the key atom, no? That is connected to the benzene ring. Now, oxygen atom is having 2 lone pairs. And oxygen atom is connected to what? Here we are having carbon atom. So oxygen is not connected to any more electronegative element. And it is having lone pair, that is why it is going to be plus M. ये तो हम लोग ने देखा ही था, OCH3, oxygen, no, plus M. Here CN. So CN is the functional group. And then the key atom is carbon. Is it connected? It is connected to nitrogen.
वाया ट्रिपल बॉन्ड, यस, सो इट विल बी -m, है ना. NO2, नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन विल बी कनेक्टेड टू ऑक्सीजन वाया मल्टीपल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज -m. यहाँ पे तो आपको लोन पे दिख रहा है की एटम में, सो इट इज गोइंग टू बी +m. रिश्ता मेक सेंस, यस और नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. कोई एक्सप्लेन करना है क्या, कोई एक सा? डू आई नीड टू एक्सप्लेन सर एनीवन? थर्ड. थर्ड वन, So, can you हाँ. explain the last? लास्ट वन, अच्छा ठीक है, लास्ट वन पहले कर देते हैं. सी द फंक्शनल ग्रुप इज Br, है ना. की एटम इज Br, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर एलिमेंट, है ना. एंड इट इज हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना. See, all the halogens will be having lone pair electrons because they have 7 electrons. And from 7 electrons, one of them will be used for the bonding. We are remaining with 6 electrons, and 6 electrons will be making the lone pair. That means 3 lone pairs. Got this, Yes, sir. Rishita? ठीक है. Akib, Yes, sir. benzene ring is connected to oxygen. Yes, sir. Oxygen is key atom, है Yes, ना. sir. Oxygen is further connected to carbon. ये तो carbon है ना. Yes, sir. And carbon is, which is more electronegative, carbon या oxygen, Oxygen. है ना. तो ऑक्सीजन तो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, Yes, sir. कम से. तो दैट इज व्हाई आई हैव क्रॉस्ड इट. एंड ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर होते हैं, जबकि एटम पे लोन पेयर होगा तो +m. गॉट इट. Yes, sir. चलिए.